सो प्रीवियस क्लास रे आमे 50 क्वेश्चन डिस्कशन करथिले आज यो नेक्स्ट 50 क्वेश्चन डिस्कशन करिया। सो क्वेश्चन नंबर 51, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एन एपिक पोएम। या भितर कोटा एपिक पोएम रे गोटे कैरेक्टरिस्टिक फीचर नुह बोली पचारछि। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ट्रोचेक हेक्सामीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन होची क्वेश्चन नंबर 52, व्हिच एलिजी डज नॉट मोन ए सिंगल इंडिविजुअल। को एलिजिटी गोटे सिंगल इंडिविजुअल पे शोक प्रकाश करूना सेटा हे जबो ऑप्शन नंबर ए, एलिजी रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53, कॉमेडी ऑफ मैनर्स इज आल्सो नोन एज। कॉमेडी ऑफ मैनर्स को आउ कोन कहै छै। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, एंटी सेंटिमेंटल कॉमेडी भी कहै छै। क्वेश्चन नंबर 54, हु इंट्रोड्यूस द हीरोइक ट्रेजेडी इन इंग्लिश लिटरेचर। सेटा ऑप्शन नंबर बी, जॉन ड्राइडन इज द करेक्ट आंसर। हु कॉइन्ड द टर्म थिएटर ऑफ द एब्सर्ड। सो थिएटर ऑफ द एब्सर्ड टर्म टी किए कॉइन करथिले। ऑप्शन नंबर डी, मार्टिन एस्लिन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56, व्हिच ड्रामाटिक genre is based on the Wolfram-Dung's effect to remind the audience that they are watching a piece of theatre, a presentation of life, not real life itself. ताले एटा हिजबो ऑप्शन नंबर डी, एपिक थिएटर इज द करेक्ट आंसर। हु इज ऑफन कंसिडर्ड द फादर ऑफ हिस्टोरिकल नॉवेल। क्वेश्चन नंबर 57, हु इज ऑफन कंसिडर्ड द फादर ऑफ हिस्टोरिकल नॉवेल। ऑप्शन नंबर सी, सर वाल्टर स्कॉट इज द करेक्ट आंसर। Who pioneered the expressionist plays with his autobiographical trilogy To Damascus। से थिले ऑप्शन नंबर बी, ऑगस्ट स्टीनबर्ग इज द करेक्ट आंसर, जे कि एक्सप्रेशनिस्ट प्लेज रो पायोनियर थिले। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59, लव लेटर्स बिटवीन ए नोबलमैन एंड हिज सिस्टर व्हिच इज ऑफन कंसिडर्ड द फर्स्ट एपिस्टोलरी नॉवेल इन इंग्लिश लिटरेचर हैज बीन एट्रिब्यूटेड टू। तो याको किए लिखिथिले जोटा कि फर्स्ट एपिस्टोलरी नॉवेल इन इंग्लिश लिटरेचर बोली कहा जाए। तो यार राइटर थिले ऑप्शन नंबर ए, आफ्रा वेन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60, हु इज द ऑथर ऑफ द ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल द बेल जार। तार ऑथर थिले ऑप्शन नंबर सी, सिल्विया प्लाथ इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 61, व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ मीनिंग इन ए पोएम एज प्रपोज्ड बाय आई रिचार्ड्स इन हिज प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म ए स्टडी ऑफ लिटरेरी जजमेंट। तो कौ मीनिंग कथा से कही नथिले, सेटा थिला फॉर्म। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। बाकी तीनटा कथा से कहिथिले फीलिंग, टोन एंड इंटेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62, which of the following statements with regard to the binary pair Lang and Parallel introduced by Ferdinand de Saussure is not correct। कोटा करेक्ट नुह बोली कहिछि। सेटा है जो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। पैरोल इज द कंडीशनल रिलीज ऑफ प्रिजनर्स बिफोर द फुल कंप्लीशन ऑफ देयर सेंटेंस। डी नंबर भूल अच्छी, तेणु सेटा करेक्ट आंसर हिजबो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63, which literary theory emphasizes the impact of economic and class structures on the creation and reception of literature। that is option number A, Marxism is the correct answer। Next question number 64, the postmodern condition, a report on knowledge is considered a bible of postmodernism। who is its author। यार author के थे ऑप्शन नंबर ए, जीन फ्रांकोइज लियोटार्ड is the correct answer। Question number 65, in post-colonial theory, which term refers to the process through which the colonized subject copies the colonizer's behavior, culture and values but in a way that's almost the same but not quite। So it is option number D, mimicry is the correct answer। Which literary theory reopened the interpretation of literature to the social, political and historical milieu that produced it। that is option number B, new historicism is the correct answer। who introduced the concept of orientalism को किए इंट्रोड्यूस करथिले। ऑप्शन नंबर डी, एडवर्ड साइड इज द करेक्ट आंसर।
Next, question number 68. In new criticism, which term is used to describe the emotional or intellectual impact created by a literary work? That is option number B, affective fallacy is the correct answer. Question number 69. Who is known for introducing the concept of heteroglossia? A concept को किए introduce करथिले? Option number C, Mikhail Bakhtin is the correct answer. Next, question number 70. Which of the following concept critic combination is not correct? कोटा correct नहीं बोली पचारची सेटा होची ऑप्शन नंबर बी लिपस्टिक फेमिनिज्म सांड्रा गिलबर्ट जो कॉम्बिनेशन टा भूल अच्छी ताले सेटा हिजबो करेक्ट आंसर. Question number 71. Which dramatic technique does the grave digger scene in Hamlet exemplify? Hamlet play रे जो grave digger scene थिला से को dramatic technique को देखौचे सेटा होची ऑप्शन नंबर बी कॉमिक रिलीफ सेटा गोटे कॉमेडी सीन थिला. Question number 72. The major turning point in Oedipus Rex by Sophocles when King Oedipus realizes that he has killed his father and married his mother is known as. ताले से टर्निंग पॉइंट टाको कौन कुहाजिबो जतबे ऑडिपस रेक्स रियलाइज करथिला कि से कौन भूल करथिला सेटा होची ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर पेरिपेटिया. She is all states and all princes I nothing else is. Which figure of speech has been used in this quotation from Donne's The Sun Rising? तो एटा जॉन डन को सन राइजिंग पोएम रो गोटे लाइन एथिरे को फिगर ऑफ स्पीच यूज हिची सेटा होची ऑप्शन नंबर ए कॉन्सेप्ट इज द करेक्ट आंसर. What is the process in which a story's tragic ending allows audience to experience profound emotional release? Option number C, catharsis is the correct answer. Next, question number 75. In Frankenstein, Victor Frankenstein creates a monster in the hope of achieving greatness, but the creature ultimately brings about his ruin and the deaths of his loved ones. It's ironical that Victor's ambition leads to his destruction. It is an example of तो को प्रकार आयरनी रो एग्जांपल सेटा होची सिचुएशनल आयरनी बस ये गोटे सिचुएशन गेस करथिले किंतु सिचुएशन किछि अलगा हेला. That is option number C, situational irony is the correct answer. Question number 76. The son was a toddler insistently refusing to go to bed. It was past 8:30 and still light. Which figure of speech एथरे यूज हिची सेटा होची ऑप्शन नंबर बी मेटाफर. Next, question number 77. I must be cruel only to be kind. This excerpt from Act 3 scene 4 of Hamlet is an example of it. Kaharo example I must be cruel only to be kind. तो एटा होची paradox रो example बा एडी विरोधाभास देखिया पे मिलुची तो एटा हिजबो ऑप्शन नंबर ए paradox is the correct answer. Next, question number 78. T.S. Eliot used this phrase to describe a set of objects, a situation, a chain of events which shall be the formula of that particular emotion that the poet feels and hopes to evoke in the reader. What is it called? याको कौन कुहाजिबो सेटा होची ऑप्शन नंबर बी ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव. Next, question number 79. Mine is a long and a sad tale, said the mouse, turning to Alice and sighing. It is a long tale, certainly, said Alice, looking down with wonder at the mouse tail. But why do you call it sad? Wordplay with tail is a literary device called. तो एथिरे जो tail word को नहीं की word play हिची ताहले एथिरे को literary device हिची सेटा होची pun जो एथिरे word play ही थाए बा गोटे word रो more than one meaning देखा जाए था सेटा को हमें pun बोली कहया. ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर. Question number 80. Stephen Dedalus in A Portrait of an Artist as a Young Man is struck still by the pure beauty of a woman standing in the surf at the beach. It is this ordinary but exalted image that compels him to turn to the pursuit of expressing beauty.
Daedalus decides to become a writer. What is this literary device that brings about a life-changing realization known as? ताले को कौन कह ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर एपिफेनी बा कौन से सडन रियलाइजेशन होबा तो एपिफेनी कहया ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81 ग्रामर सेक्शन one morning an old man bent with age dash along a lonely road slowly was walking option number B is the correct answer which of the following is a grammatically correct sentence question number 82 कही कौटा ग्रामाटिकली करेक्ट अच्छे से ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर जोटा कि ग्रामाटिकली करेक्ट अच्छे क्वेश्चन नंबर 83 द ओल्ड मैन सेड आई एम ट्राइंग डेस माई लॉस्ट इयर्स ताहले कौटा ठीक हम सेंटेंस को कंप्लीट करने दैट इज ऑप्शन नंबर डी द ओल्ड मैन सेड आई एम ट्राइंग टू फाइंड माई लॉस्ट इयर्स ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84 द बॉय वाज अम्यूज्ड एंड गेज्ड डेस द ओल्ड मैन फॉर ए व्हाइल को प्रिपोजिशन करेक्ट हम से ऑप्शन नंबर सी एट द ओल्ड मैन फॉर ए व्हाइल नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85 द ओल्ड मैन लुक्ड डेज ही हैड नॉट इटेन फॉर इयर्स को लिंकिंग डिवाइस ये यूज कर ऑप्शन नंबर ए एज इफ द ओल्ड मैन लुक्ड एज इफ ही हैड नॉट इटेन फॉर इयर्स द बॉय सेड डेस आई कैन गिव यू समथिंग टू इट a conditional clause which of the following is the correct conditional clause ताले correct कोटा हबो option number C is the correct answer if you come with me I can give you something to eat next question number 87 the old man said to the boy thank you my child तो यार reported speech टा कौन हबो ना option number A is the correct answer addressing the boy fondly as my child the old man thanked him option number A is the correct answer next question number 88 the boy asks the old man to kindly follow him to his house तो याको जो डायरेक्ट स्पीच लिखा कौन हो ना ऑप्शन नंबर डी the boy said to the old man please follow me to my house next question number 89 the boy's mother fed the old man to complete the sentence option B will be the correct answer to his heart's content which of the following sentence is grammatically acceptable so option number B the old man was not only glad but also pleased next गोटे poem थिला जहार क्वेश्चन गुड़ा देखिदवा क्वेश्चन नंबर 91 what is the central theme of the poem so option number B overwhelming beauty of a city by a river in an early morning option number B is the correct answer question number 92 what is the main idea expressed in the octave octave रे जो main idea टा कौन majestic beauty of the city in an early morning option A is the correct answer question number 93 what kind of poem it is ये गोटे को टाइप रो poem ये होची गोटे पेट्राकन sonnet next question number 94 dull would he be of soul whom does he refers to it he कहा को refer करची a passerby question number 95 and all that mighty heart is lying still what does mighty heart implies here option number D the silent city is the correct answer question number 96 the river glideth at his own sweet will which figure of speech is used here को figure of speech हबो symbol simile metonymy or personification so option number D is the correct answer personification never did sun more beautifully steep in his first splendor इतरे को फिगर ऑफ स्पीच हिची सेटा हिजबो ऑप्शन नंबर ए हाइपरबोल क्वेश्चन नंबर